Facebook. Okay. Let me just get the link and I'll share the link in WhatsApp group and in chat here also. Let me see where we got the link. Okay, so we have people still joining in. And in the meantime, I'll just get the Facebook link. Okay, I've got the link. I'm just sharing the link in chat so that if you are not able to hear, you can go straight to Facebook and watch the webinar there. Or if you get logged out, you'll be able to click on this. I just sent the link, so you can just save it, copy it, and keep it with you, and then there won't be any problem, even if you are having any issues with Zoom. All right, let's start. It's already 6:05. Namaskar once again. My name is Anil Chauhan, and I'll be your host for the webinar today. And can we just have a show of hands, or can you just write what all problems you are facing, what health issues are facing, and due to which you are attending this webinar? क्या आप अपनी प्रॉब्लम जिसकी वजह जो हेल्थ इश्यूज है जो डिजीज है जिसकी वजह से आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया है आप चैट में टाइप कर सकते हैं किस प्रॉब्लम की वजह से आपने ज्वाइन किया है नो साउंड the sound is fine for most of the people. Savita ma'am, can you just check your audio settings? Unable to lose fat, hip joint, heart issue, knee pain, C-section, sometimes finger. Okay, okay, wonderful. Dystonia, shoulder pain, osteoporosis. All right. Slip disc, paralysis, sciatica. All right, all right. Thank you. Thank you so much for participating. So I'll just share my screen and we'll start the webinar right away. And I'll just let you know how this webinar will proceed. First of all, I'll just introduce what this therapy is about. Then we'll play Swamiji's video in which he's explaining how this therapy works. And after that, we share the program details. Okay. It's a paid program that we'll share after it, but it's a webinar which is an introduction to अष्टांग चिकित्सा. ये अष्टांग चिकित्सा का एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार है जिसमें आपने हिस्सा लिया है अभी, तो उसके बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे. So give me some time and I'll just share my screen once again. Are you able to see the screen? If you are able to see the screen, please type yes. Okay, okay, okay. So you are able to see the screen? Right. Thank you. Thank you. Thank you for letting me know. So this is Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. What is it? ये है क्या? जानते हैं. I welcome you all to Ashtang Chikitsa webinar. My name is Anil Chauhan and I'll be a host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money and time on various treatments. ये एक अपने तरीके का एक अनूठी चिकित्सा है जिसमें ना कोई दवाई इस्तेमाल होती है ना कोई सर्जरी होती है. तो इसके बारे में आज हम जानेंगे. शायद आपने थोड़ा बहुत सुना हो, कुछ लोगों ने सुना होगा, बट most of the people have not heard about this therapy. So we'll get to know about this therapy.
Uh, Ashtang Chikitsa can also be used as preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. I'd also like to introduce all to Swami Rajvibhu. He's a rare कुंभक योगी. स्वामी राजविभू एक कुंभक योगी हैं जिन्होंने अष्टांग चिकित्सा या कुंभक थेरेपी को रिवाइव किया है. ये हमारे आयुर्वेद का हिस्सा होता था, बट ये चीजें खो गई हैं, तो स्वामी जी उसको दोबारा लेकर आ रहे हैं. And Swamiji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine. And he's taken people out of chronic disease like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening disease like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtanga Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. You'll get to know a lot of things which you've never heard before. आप बहुत इस वेबिनार में स्वामी जी का जब मैं वीडियो प्ले करूंगा, ऐसी चीजें आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे और बीमारी के बारे में जानेंगे जो शायद आपने आज तक कहीं भी ना सुनी हो. This is a completely different way to look at the human body and how it functions. Okay. Who is this webinar for? ये webinar किन लोगों के लिए है? This is for people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. Most of the people, uh, they go through a therapy which gives them a temporary relief, but after some time the disease comes back. ज्यादातर लोगों का ये एक तजुर्बा होता है कि कोई भी थेरेपी करते हैं, जब तक वो थेरेपी चलती है तब तक तो ठीक है, थोड़े समय के बाद बीमारी दोबारा लौट आती है. तो दूसरा, दिस webinar is for people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. ये उन लोगों के लिए जो अपने शरीर का, अपनी हेल्थ का जो एक डिसीजन है अपने हाथ में लेना चाहते हैं और डिपेंड नहीं होना चाहते किसी और के ऊपर. सो दिस इज फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ पीपल, राइट? दिस वेबिनार reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicines. These are the things that most people uh, read and come, that because most of the people are tired of medicine, they're tired of, frustrated with the pain and aches and everything. So this is for those people. Swamiji will talk about 8 sharir or softwares which are inside our body. What are they? सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्या शरीर, प्रकृति and vikriti. Most of these things may be new to you, but don't worry. Swamiji will explain in detail what each sharir or each software is all about. It's like I said, it's a completely different way to look at the human body and the disease and how it functions. Ashtanga Chikitsa can heal. There are a lot of issues. Primarily, like I told you, these are for neuromusculoskeletal issues. And these are some of the common ones: knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issues, slip disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder or drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy or nerve issues, muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis. So difficult words, but see how many diseases there are. Then let's go.
myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN or avascular uh, syndrome, Alzheimer's disease, dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. List goes on and on and on. So let's hear from Swami Rajvibhu about what all these 8 are and how you can come out of your issues. So I'll just play the video, and after that, we'll share the details of the program and how you can participate in this course. Give me some time, and I'll just share the video. In the meantime, you can write about your health issues and you can leave your number so that later on, after the webinar, we can connect with you personally and get to know your case, your condition at a personal level. Just give me a few seconds more and I'll share the video. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. सो सपोज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है आज के समय? नी पेन. लेट्स टेक नी पेन एज एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में. नी पेन से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो सम पर्सन हु गॉट एन इंजरी इन वन ऑफ द नीज विल गेट अ नी प्रॉब्लम इन दैट लेग, है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और अ स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा. उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation? Inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if
You go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurved kalachar, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is
something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti, and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी humanity. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So, is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So, आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने situation नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट टू, अ बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति, अ बैलेंस ऑफ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन, एंड देयर इज अ मेथड टू डू इट. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, व्हाट डू यू डू? समबडी इज हिटिंग यू, कोई आपको मार रहा है, यू फील डैमेज ना, यू थिंक देयर विल बी अ डैमेज. व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, इजंट इट? यस और नो? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. व्हाट एवर आई एम सेइंग, यू नो इट ऑलरेडी. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना.
अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, देर आर सर्टन सीन्स दैट यू डोंट वांट टू वॉच, देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे। एक बच्चे को देखो, सी अ किड, द किड विल क्लोज द आईज, सो यू होल्ड योर सेंसेस ऑल्सो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस, यू होल्ड योर ब्रेथ। इफ देयर इज अ बैड साउंड, यू क्लोज योर ईयर्स, आप नहीं सुनना चाहते इसको, यू होल्ड योर सेंसेस। सो होल्डिंग योर ब्रेथ, होल्डिंग योर सेंसेस इज कॉल्ड एज कुंभक, इसको नाम दे रहे हैं हम। सो इट इज नॉट जस्ट ब्रेथ होल्ड, इट इज द होल्ड ऑफ सेंसेस ऑल्सो। आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऑल द 5 सेंसेस, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा। एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है, there is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार। Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती disaligned हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें disaligned हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi.
or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? सांस रोकी आपने? इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, व्हाट इज द बेसिक की? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? इट इज कुंभक, इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now, let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट?
But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ. यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड. करके देखिए दोबारा. अगेन डू इट अगेन. सी, पुश इट हार्ड. यू होल्ड योर ब्रेथ. सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma.
if this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your murmurs are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in Ashtanga Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो फंक्शन, देयर आर थ्री थिंग्स विच आर अटैच्ड टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी: मटेरियल, एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मीन्स थ्री थिंग्स: मटेरियल, एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. सो व्हाट इज योर जॉइंट प्रॉब्लम? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वात दोष. राइट? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. सो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So dosha शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality.
So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. You will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा.
So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान ही कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root उदाना. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment from through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यासा. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं. दैट इज व्हाई मोर मेडिसिन, मोर डिजीज इन द लास्ट 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट्स इटसेल्फ. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you everyone for listening to Swamiji patiently. I hope you must have got a new perspective about the way this body functions and about the disease. And let me give you a very good news. Swamiji was traveling since the last couple of days, and I just got a message that he'll be joining the webinar live at 7:30. And he'll be answering your questions if you have any.
So I'd request all of you to type your question which you want to ask Swamiji in the chat, so that we can take it up when Swamiji joins. Now, uh, we'll invite one of the previous participants, to share her experience about in Ashtang Chikitsa and what all benefit she has got. And after that, I'll share the program details, the 9-week program details. And soon after that, Swamiji will be live to answer all your questions, and you'll be able to meet him and ask whatever is in your mind. Okay. So I'll just see if Sanghamitra ma'am has joined. Yes. Sanghamitra ma'am, I'm unmuting you and I'm putting you on spotlight. Yeah, thank you. Welcome, ma'am. Thank you for coming here and sparing your time. I'll just want you to share your experience in Ashtang Chikitsa. What were your issues before you joined the program? How you found the program, and what is your health condition now? Thank you. Oh, thank you for giving me this opportunity. And I have been suffering with rheumatoid arthritis for the last 13 years. This I got developed after my delivery, after my baby was born. And I am 46 years right now. Over a period of time, with medication, it was becoming difficult to control the disease, because with allopathy, my experience is every time I go, the dosage is increased. There is relief, but then the dosage is increased. And at one point of time, after about 5 or 6 years, the doctor told me, now you prepared yourself. अब आपके bones में injection लगने वाले हैं. Now you prepare yourself. So I got really agitated. Like, अब bones में क्या injection लगना है? What is this? Like, क्या हो गया? And I was still in my 30s that time. So I said, ऐसे तो नहीं हो सकता. I have to find a solution to this. कुछ तो है, कुछ तो होना, मतलब कुछ तो इलाज मिलेगा ही. And then someone told me, why don't you try allopathy, बंद करो, homeopath देखो. And I contacted a doctor who was into homeopath, and I was doing fine. Allopath मैंने totally छोड़ दिया था. In that whole duration, I was doing fine. But जैसे COVID आया, slowly I got COVID in 2021, and I did not have to be hospitalized. मैं घर में ही थी. But after COVID, about 3 months, I was so weak, so tired, and feeling so much pain in the bones, and especially my left knee, where thoda sa bend hone laga, and I was not getting enough strength in my knees. I was not able to walk very well. I tried doing घर में yoga वगैरह जैसे होता है. I've never been a regular yoga practitioner. But जैसे किसी ने बोला ये करो वो करो, तो I tried doing something. But then थोड़ा सा control हुआ, not much. And I think 2022 में अक्टूबर में मुझे फिर से कोविड हुआ. And उसके बाद विंटर में वैसे भी rheumatoid arthritis थोड़ा ज्यादा हो जाता है. उसके बाद से suddenly over a period of like between October 22 to March 23, लेफ्ट नी में बहुत ज्यादा बेंड आ गया, राइट नी में भी थोड़ा सा डिफॉर्मिटी आ गया, एंड so much of pain. And I said, what is happening? And I went to doctors. I showed in Calcutta. I showed doctors in Delhi, and everyone said कि आपका knees बिल्कुल खराब हो चुका है, especially the left one. Total knee replacement, और कोई चारा ही नहीं है. I said, at this age, total knee replacement, because whatever I have heard about knee replacement is like वो 10-15 साल तक ही चलता है, उसके बाद नहीं. I said, अब इस एज में होगा तो फिर मैं क्या करूंगी आगे जाके. And even when my homeopath doctor said कि नहीं replacement आप करो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, so मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया तब तक. And I was desperately looking कि क्या कर सकती हूँ मैं कि मैं अपने आप को heal कर सकूं, because I believe we have the power to heal ourselves, but I had no, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था कि कोई मिले जिसके थ्रू मैं ये हेल्प लूं और करूं. And obviously I was going through social media looking for things. जब मुझे
अष्टांग चिकित्सा के बारे में. I found this ad in Instagram. And I said कि चलो let me attend this webinar. And जब स्वामी जी से सुने, उनकी बात सुने, and he was in the question answer session also. I was going through physiotherapy and it was very painful. So he said कि you will have to give yourself a chance. आप ये करो, and this has helped a lot of people. Rheumatoid arthritis भी reverse होता है. I said कि वो होता है ना, मतलब आप जब डूब रहे हो आपको तिनके का सहारा भी काफी लगता है. तो मुझे लगा कि चलो इतना कुछ किया है, why not just go and try it out. That is how I started 7 weeks back. It has been 7 weeks now. I am with Ashtang Chikitsa. In the 7 weeks, what I have seen, yes, there is pain. I will not say that pain has reduced hugely, no. But balance better आया है. Left कुछ क्रिया है जिसको आपको एक पैर के ऊपर बैलेंस करके दूसरा पैर वो करके करना होता है. I was not able to do that initially. Left leg में मेरे को बिल्कुल strength नहीं था. I could not do it. मुझे पकड़ के करना होता था. But I was always trying. स्वामी जी said कि आपको जितना भी हो सकता है उतना ही करो. Even if you can do 10% of what is required, just do it. And I have been doing it. So abhi recently, over the last 1 week, I've seen that I have balance on my left knee. Without holding on to something, I can do that exercise. बहुत फर्क पड़ा है, मेरे को strength मिल रहा है knees में. Secondly, I see that I have got so much of energy. पहले मैं बैठती थी और थोड़ी देर में ही लगता था कि नींद आ रहा है या I'm not getting energy. अभी I have a lot of energy. My skin has improved so much. In fact, my friend was saying that they कर क्या रही है तू, तेरा skin इतना अच्छा हो गया है. So this is because of this Ashtang Chikitsa, the practices that are there. Also, मेरा digestion improve हुआ है. मुझे बहुत gastric problems होते थे, अभी काफी फर्क हो गया उसमें. I can keep on saying I have got so many benefits. I think also I have a lot of hope that this is going to heal me up. And I'm looking forward कि अभी 7 weeks हुआ है, 9 weeks के बाद 10th week में हमारा customization होगा, and physiotherapy भी मेरा चल रहा है. It is also giving me a little, पहले body जितना stiff होता था, physiotherapy इतना resist होता था body में, इतना pain होता था. अभी वो body थोड़ा सा supple हुआ है, थोड़ा allow हो रहा है to bend the knees and to do things. So काफी improvement हुआ है. And I have been doing this regularly in the last 7 weeks with my travels and all. बीच में मैं travel भी की हूँ. With everything, I have not missed it for more than 5 days. जिस दिन मुझे सुबह ही मैं उठ के करती हूँ, first thing in the morning. जिस दिन नहीं हो पाता है, I find time to do it in the दोपहर में कर लेती हूँ या शाम को. I don't miss it because मुझे लगता है ये मैं करूँगी ना तो मैं बिल्कुल I believe it कि मैं ठीक हो जाऊँगी. So I would say कि we are from a country जहाँ पे ये self healing हमेशा proclaim किया गया है, सिखाया गया है. In between we have gone into allopath and various kind of medications and हम सब अपने root से दूर चले गए हैं. So my only thing is that I'm so happy that Swamiji is there to guide us. This Ashtang Chikitsa, Kumbhak is there, and I have seen the benefits. So if you, my only thing appeal to you is आपको कोई भी कुछ हो रहा है, आप अपने आप को time दो, विश्वास के साथ करो. I'm sure you will benefit in some way or the other. Maybe it will take more time for someone, maybe it will take less time for someone. I am long way to go, but I have progressed a lot. जैसे पहले मैं बिल्कुल कुछ थे कि एक पैर straight करके दूसरा पैर उसके ऊपर से fold करना पड़ता, बिल्कुल नहीं कर पा रही थी 3 weeks back. अभी I am able to do that. So every day I see improvement because मैं शिद्दत से कर रही हूँ. I believe it because मेरे पास और कोई option है ही नहीं. I just can't go for a surgery and spoil my life. This is my only option, and I believe it. So thank you so much, Abhisha team, for giving me this opportunity to share. And participants, आपको अगर कुछ भी मिला है मेरे से, मेरे sharing से, I would say कि आप
बिल्कुल अपने आप को एक चांस दो. Do it with your belief. Thank you so much. Thank you, Sanghamitra ma'am. Thank you for sharing your experience and motivating other participants. I'm sure जैसे जैसे आप practice करते रहेंगे and daily benefits, daily improvement होता रहेगा. Now we have our second and the last participant who will be sharing straight after which we'll share the program details. Lalit ji हैं. ललित सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप प्लीज अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए. Okay. Welcome sir, thank you for coming and sharing your giving your time. Please share what your issues were and how you found Ashtang Chikitsa. What is your condition now? Thank you. Right. I just listened to the ma'am as well. The thing is that I was basically suffering from blood pressure since long. I can say about more than 10 years. Right. Anyway, it's not a big deal. But then after that, I start getting knee pain, which really troubles me as well. So I gone to the doctor, asking what to do. So in place of 4, he make it 8 tablets. You take every day. I got really sick. To be frank with you, I just think I need a life without medicines. So this is what I keep on trying. Ayurvedic, homeopathic, this and that I try every damn thing, whatever I can do. But unfortunately, कहीं भी मेरे को कोई भी रास्ता ही नहीं पड़ा. Even जो मेरे friends हैं, they are no doctors. उनका कहना था लाइफ में एक ही चीज रहती है, replacement. Nothing we can do about it. Finally, I just going through the different sites and finally I find on the Facebook about this Kumbhak therapy. And just believe me, I just said why not to try this last option which I left for him. And I must say this is my dream to be medicine free. And the only thing I can expect is from this Kumbhak therapy. I couldn't find any other alternative to this. Whatever Guruji Swami has said, see, we know everything right from the beginning, but we never thought about it. Ki stopping your breath can help you a lot about it. बचपन में ये सुना था कि आप स्विमिंग जो करते हैं उनको अपनी ब्रीथ से रुकनी पड़ती है. That's all we know about it. लेकिन इसके बेनिफिट कितना होते हैं, we cannot even dream of. And I'm really happy कि medicine free life भी हो सकती है. And this is still my dream. I have reduced my medicine as well. On top of that, yesterday I came from New Zealand, fortunately for some of my business trip to India. So if I travel for about 22 hours, it's a long flight. So I got to start smelling on my feet. I remained silent for about 2-3 days. I didn't move out. I was just sitting at the home. Then yesterday, once I start getting out of the road, I find I was not feeling good look, something wrong with my eyes. So immediately I just gone to a nearby optician. I thought, okay, check it. What's wrong? I need to change my glasses. And you will surprise. He told me that your eyesight number has been reduced. I was just got stunned how it has been reduced. I have not done any medicine. I have not taken any damn thing. How this number has been reduced. Then he realized whatever the exercises I am doing is all because of that. And obviously the glare on the face, which Madam said, it's just amazing. Even whenever I go to the New Zealand, people tell me it's about 46, 47, while I'm 67 now. So much change in the face. Even my own son, he's telling, Daddy, you're getting younger. I'm just surprised. But believe me, this medicine-free life is only possible through Kumbhak therapy. Otherwise, no other way I can even think of. And this is the best option. We have taken it. Even my legs is also much better. Obviously not 100%, but I got real hope that I will be through this. And this is only because of the Swamiji and what I don't know who are the people who really
who really have done so much of research to get to the depth of this treatment. It's really amazing, much better than Ayurveda, homeopathic, allopathic. You forget about it. I really want to have a medicine-free life, and that is only possible through Kambak therapy. I couldn't find any better. And I will certainly recommend everybody who is having, who really want to have a regeneration even at this stage. I'm 67 now, but still I feel lot of change, which I really don't have a words to explain it. Basically, I'm a professional man, so I don't speak out if I really assume it. And whatever I find is just marvelous, and I really give my heartiest thanks to Swamiji and whosoever is involved in this research and all those things. It's amazing, and this is the day. Someday we can be medicine free as well. I'm really hopeful, and I would really sincerely want to contribute whatever I can do it, and I'm really happy to do it without any interest. I'm much happy with that. So once again, I ask everybody to do it, and that is the only way to be happy and a better life, much better life than we are currently in. This is all what I want to say, and my heartiest thanks to Swamiji and our Nina ma'am. She's an excellent tutor. I really appreciate that. One of the best teacher I ever had. Thank you so much. Okay. Thank you, Lalit sir. Thank you so much. And we are sure that you'll keep on improving your health and you'll be ultimately medicine free. Now, without wasting much time, I'll just straight away go to the program details, which a lot of you may be waiting for. जल्दी से मैं program detail share कर देता हूं ताकि 7:30 स्वामी जी live आएंगे to answer all your questions. So please type whatever question you have in the chat so that we can take your question with Swamiji. And I'll quickly share the program details now. Give me a few seconds. I'll share my screen to give you all the details about the program. Just Thank you. to okay. Please type yes if you can see my screen. नेहा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? Okay, great. Thank you everyone. So let's get to know the program details of Ashtang Chikitsa, the online program. First of all, this is a guided program which is conducted by Kumbhak mentors trained by Swamiji. ये एक guided program है जो online Zoom application के ऊपर conduct किया जाता है और ये trained Kumbhak mentors होते हैं, instructors होते हैं जो आपकी classes conduct करते हैं, classes में आपको सिखाते हैं. That is the first thing. Program modules, there are 3 modules in the program. Vata, Pitta or Kapha, or module 1, 2 and 3. Duration of each module is 21 days. Now, many people ask which module to join. You to complete all the modules starting with module 1. आपको तीनों modules करने होते, optional नहीं है ये सभी का combination है. It's a combination of all 3 modules which makes the whole program. But we separate it out just to give you clarity that the Vata module will be to balance the Vata, Pitta and Kapha. 21 days each module, so 3 weeks. So 3 weeks into 3 modules makes it 9 weeks. 9 weeks is the whole duration of the program. Now you see here, it's written 9 plus 1. Why 1 week extra? We'll understand in a short while. There will be 2 live classes every week, out of which 1 will be the learning or the main class and 1 will be the mentoring or the practice class. हफ्ते में 2 classes रहेंगी, एक main class रहेगी और एक practice class. तो इस तरीके से total 9 हफ्ते में 18 class हो जाएंगी. 9 weeks into 2 week classes per week makes it 18 classes plus 1 extra class. वो क्यों class extra है समझ आप थोड़ी देर में जान जाएंगे. What are the next steps? You pay the program fee, and there's a special webinar pricing that we have for people who have stayed back.
After that, you fill the participant onboarding form so that we can create login credentials for you to access the course. What is this course? That too will understand. Then you start your classes, starting with module 1 or the VAT module. Ultimately, you will be completing all 3 modules, but VAT module is the module that all of you will be starting from. Total classes, again, 6 classes in each module. So, and there are 3 modules, so 6 into 3, 18 classes. And then you see, I've written in white this color, 18 learning class plus 1 customization class. What is this customization? That also we will get to know. Now, batch 134 starts on 12th June, which is a Monday at 6 p.m. 134वां बैच 12 जून मंडे या सोमवार के दिन शुरू हो रहा है शाम 6 बजे. मेंटर क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस थर्सडेज को होंगी फॉर मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 2 के लिए फ्राइडेज को प्रैक्टिस क्लासेस होंगी और मॉड्यूल 3 के लिए सैटरडेज को क्लासेस होंगी. ये हम सभी डिटेल्स व्हाट्सएप चैट में शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे और अभी जूम चैट के अंदर भी. What is the class experience like? These are live sessions, as you must have understood by now, which are conducted through the Zoom app. Mentors watch all the participants in the class. So this is the reason that you to keep your cameras switched on. आपको क्लासेस में कैमरा ऑन रखना कंपल्सरी होता है क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है. Since it's an online program, so you to keep your cameras on so that our mentors can watch you and correct you and give you feedback about the way you are doing your kriyas. Then there'll be written instructions in English and Hindi. Session recordings will be there. All the classes are recorded and made available to all the participants. So even if you miss any class, you don't need to worry about it. You can watch the recording of the class and do your kriyas referring to those. There are a lot of extra things that will be shared during the course of the program, like mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. There are no diet plans in this because diet plans do not work. That's not the correct way to, have food because one kind of a food may not be suitable for another person. So how can you suggest the same kind of food? You'll get a video from Swamiji about the way to use food to cook food in a way that it does not harm the body. The food should support the body, not harm it. Okay, so you'll get a video. And there are no dietary restrictions in this. While you do this course, many people ask if there are any dietary restrictions. There are none. कोई भी diet की restriction नहीं है. Right? Then there'll be simple detox processes and a lot of knowledge will be shared in your classes and by Swamiji. Now, I've written some numbers here. I've written yearly expenses, which may be the kind of money you could already be spending just to manage the problem that you're into. यहाँ पर मैंने कुछ numbers लिखे हैं कि शायद इस तरीके का कुछ आप expense कर रहे होंगे अपनी problems को manage करने के लिए. Mind you, I'm saying management because most of the time you are just managing the problem, not treating the problem. A difference. And that's why, especially if you talk about telepathy, you have to keep eating the medicines throughout your life, but still it's not treated. So it's just management. So you could be paying doctor fee between 6,000 to 12,000 every year. These are yearly figures, depending on the kind of doctor you are consulting, depending on the city that you're in. So this could be going in the form of fee to the doctor. If you're into physiotherapy, 12,000 to 30,000 every year, you could already be doing that expense also. And medicines may be costing you 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 72,000, you may be already spending. And why I'm sharing this is because when I announce the fee, you'll realize how economical this program is. So it's how affordable this program is because we do not the kind of expense that we are doing, and we've been doing it for years. So we don't write the expense. We just have an idea. So that's why I wanted to share, because as human beings, we like to compare pricing and this and that, be it a therapy, be it a product, be it a garment, be it any product. Okay. So just wanted to show these numbers to you. आगे बढ़ते हैं. And it's also important to know
who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है ये किन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके ये किन लोगों के लिए है. Let's see. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Why we saying this? Why Swamiji always talks about magic pill? Because there is none. एलोपैथी में जो आप दवाई खाते हैं वो ट्रीटमेंट नहीं होता है. इफ देयर इज अ पेन, आप पेन किलर लेते हैं, वो सेंसेशन जो होता है पेन का उसको खत्म करता है, नॉट द रूट कॉज ऑफ द पेन. ऐसे ही कोई आप मैजिक पिल की इसलिए भी हम बात करते हैं बिकॉज सिंस चाइल्डहुड यू बीन पॉपिंग अ पिल. बचपन से हम कोई ना कोई दवाई खा रहे होते हैं. इफ यू लुक अराउंड इन योर फैमिली, इफ यू हैव स्मॉल किड्स इन द फैमिली and if they get a slight of cold or cough, you straight away go to the doctor. Most of the people, I'm not saying all, but most of the people, they straight rush to the doctor. They get worried what has happened to the child, without realizing that it will be okay in a few days, 3-4 days, the thing will be okay. But we don't give the body a chance to recover, to heal itself. And that's why we've got into this habit of popping a pill. So if you're looking for such kind of a medicine, this program is not for you. And if you want results tomorrow only, then also this program is not for you, because the problem did not get inside your body overnight. रातों रात आपके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आया तो रातों रात जाएगा भी नहीं. So we have to understand this. And this is not for those who are not ready to work on their body. ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने शरीर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, because daily you will be needing 80 to 90 minutes to do your daily क्रियास. आपको अपने शरीर के ऊपर 80 से 90 मिनट का टाइम देना होगा, क्योंकि ये क्रिया करने में समय लगता है. बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है. अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं तो समय आपको देना पड़ेगा. This is very simple. So if you do not have this kind of a time with you, then this program may not be for you. And this is not for those who are impatient. We understand that when you're into pain, when you're into some kind of a disease, and that to a chronic disease, the patience goes down. But still, हमने अपनी तरफ से बताना था, we have to be very clear that please be patient during the course of the therapy. Because normally you don't expect something to happen to your body within a day's time. That does not happen. So patience चाहिए होता है. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd just like to stop here and elaborate on this point. It's a very important point, because many people misunderstand the advertisement that they saw in Facebook or Instagram, because in that we have written free webinar, free introductory webinar, but they misunderstand. They think that the course is free. So this is the webinar that you are attending is in an introduction to Ashtanga Chikitsa. It's an introduction to Kumbhak therapy, but the 9 weeks program is a guided program to be done under supervision. That is a paid program. So please do not ask, please do not get, a lot of people get angry that you are now charging money. There's none of this. The webinar is free because it's an introduction. Nobody has heard about, most of the people have not heard about it. So how can we charge for it, to just explain something? Okay. But the 9 weeks program is a paid program. And this is also not for people who are looking for just some tips. Maximum number of people, almost 70 to 80% of people join a lot of webinars in the hope of picking a tip. See, any kind of a long-term solution does not work on tips. Had this been the case, then there are thousands, there may be lakhs of videos on YouTube. There are thousands of experts or claiming to be experts and giving some tips. And that's too free of cost. So, अगर बीमारी को ठीक होना होता, कर चुके होते आप अपने जो YouTube में वीडियो देखकर कर चुके होते हैं. But any kind of treatment, a proper healing does not work on tips. So if you just here to pick up some tips, because Swamiji didn't give any tips, because the therapy does not work on tips. So ये program अगर आप tips के लिए आए हैं तो it's not for you. This was just to explain how this body functions, just to give you a new perspective. Okay, आगे बढ़ते हैं. What all you get in the program? Prana Shakti diagnosis. I'll just please don't scratch on your screen because thoda disturbance hota. Let me erase this and
Just give me a few seconds. Okay. Please don't scratch on your screen, otherwise it creates disturbance. What all you get? Pran Shakti diagnosis for root cause determination. This alone in itself could be worth the whole cost of this program. Why? Because not many therapies are there, not many treatments are there which you get in the market, which are able to determine the root cause. बीमारी की जड़ पता करने के लिए क्या होता है, कैसे करना होता है, ज्यादातर ट्रीटमेंट्स में नहीं है. They're not able to find it. And that's why I'm saying this alone in itself could be worth the whole cost of this program. ये होता क्या है? Let me explain. Short में explain करूंगा, but you'll get an idea. You'll get first of all, this is a non-medical diagnosis. Secondly, this is an online diagnosis. Both things may look new to you and some strange to you. ये होता कैसे है? You'll get a link to a form and you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को बोला जाएगा अपनी ब्रेथ और इमोशंस के ऊपर, और वो नोट डाउन करना होगा फॉर्म के अंदर. सेकंड थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी राइटिंग अबाउट योर प्रॉब्लम इन डिटेल. जो भी आपके हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में आप. और तीसरी जो मेन इसमें चीज होगी, आपको अपनी सेल्फी फोटो अपलोड करनी होगी शोल्डर एंड अबव, जिसमें आपका फेस क्लियरली दिखता हो, आंखों पर चश्मा ना हो और लेडीज के केस में मेकअप ना हो. The third thing that you'll be required to do is to upload a selfie photograph in which the face should be clearly visible without any specks on the eyes, and in case of ladies, no makeup also. When these three things reach Swamiji, he is able to determine the root cause. If you remember in the video, he talks about the 84 forces. आपको याद है उन्होंने 84 forces की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर. कौन सी फोर्स वीक हो गई है आपके शरीर में जिसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम आ गई है, फिर दूसरी आ गई है, तीसरी चौथी आ गई है, तो वो फोर्स को पता लगा पाते हैं जो वीक फोर्स है. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्राण शक्ति डायग्नोसिस. ओके, आगे बढ़ते हैं. There'll be weekly one main class of 60 to 90 minutes. हर हफ्ते एक मेन क्लास होगी 60 से 90 मिनट की. Why 60 to 90? 60 minutes is the actual duration. Then we take up questions. The mentors in the class, they'll take up questions and they'll be, that's why the class may go on till 90 minutes. And same is for practice class, 60 to 90 minutes. Then online course access for 6 months. What is this online course access? The classes that will be recorded will be made available to you for 6 months after your program is over, so that you can watch your video again and again till you understand. Then videos of all kriyas done in the class. हर एक क्रिया जो आपको सिखाई गई है उसका सेपरेट वीडियो में मिलता है. हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लास रिकॉर्डिंग. क्लास रिकॉर्डिंग इज ऑफ द होल ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, but these videos of separate kriyas are separate small videos which you can watch just to see how a particular kriya works. Then written instruction in English and Hindi. लिखित निर्देश मिलते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में. 7th point, private WhatsApp group to ask doubts and questions. This is very important. As soon as you enroll in the program, you will be added to a class WhatsApp group. Why? Because this is the place where you'll get daily support. There'll be, like you already know, there'll be 2 live classes every week. The remaining 5 days when you are practicing alone, and if you have any doubt that time, so this is the place that you'll be asking your doubt, your questions in. Our mentors are there in the group. They'll be answering your questions, clarifying your doubts, and guiding you step by step. तो यहाँ पर जो आपका कुछ भी सवाल आता है, जब आप क्रिया कर रहे हैं, कुछ डाउट आता है, कुछ सवाल आता है, तो इस ग्रुप के अंदर पूछना है. इसके अंदर 6 डेज अ वीक चलता है. संडेज को ऑफ होता है. जो हमारे मेंटर्स हैं वो संडेज को उनका वीकली ऑफ होता है. तो बाकी 6 दिन आप डेली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. क्योंकि कोई चीज क्लियर नहीं है, आपने क्लियर उस डाउट, कोई क्रिया क्लियर नहीं है, तो आपने उसको ठीक से समझना है. अगर ठीक से समझे बगैर आप करेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए. सो व्हेन इन डाउट आस्क, व्हेन इन डाउट आस्क. सिंपल. इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग और फीडबैक. हर एक पार्टिसिपेंट का एक ट्रैकिंग होता है कि वो किस टाइप से प्रोग्रेस कर रहे हैं. अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो वो क्यों नहीं हो रही है, वो हम पता करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस ट्रैकिंग सिस्टम. देन थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th वीक.
This is very important, because if you have this question that since everybody will have a different kind of a problem, but the same kriyas will be done for all. So how does it work? एक आता ना क्वेश्चन, अगर सभी की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं लेकिन सभी सेम क्रिया कर रहे हैं तो कैसे ठीक होगी, राइट? लेट मी एक्सप्लेन. इफ यू रिमेंबर, the first point I talked about was about प्राण शक्ति डायग्नोसिस, जिसमें रूट कॉज पता करते हैं, जड़ पता करते हैं बीमारी का. Now, based on this, in the 10th week, the therapy will be customized based on this diagnosis. अब एक और सवाल उठता है, why in the 10th week? अगर डायग्नोसिस फर्स्ट वीक में हो गया है तो थेरेपी को तभी कस्टमाइज करना चाहिए ना, राइट? गुड क्वेश्चन. वो इसलिए नहीं होता है because the body first needs to be prepared to receive this customization. What happens in these 9 weeks? Let me explain. First, the Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced through the 3 modules I talked about. Remember? दूसरी चीज, आपका जो ब्रेथ है उस पर कंट्रोल सिखा जाता है. यू आर टॉट कंट्रोल्ड एक्सलेशन, because this Kumbhak therapy is based on controlled exhalation only. So unless you know how to control your exhalation, this therapy will not work, right? The third thing that is done is, as Swamiji explained in the video also, the structural alignment of the body is done. And if you remember, he talks about the 3 types of alignments or misalignment. First is the inner thighs, navel and the chest. एक structural alignment होती है, because many a times, just because there's no alignment in the body, in the structure of the body, that due to that reason there may be some problem. So एकदम structure ठीक होता ही problem दूर होता है. So these main 3 things are done during these 9 weeks. Now the body is prepared to receive this customization, which will be different for all the participants based on the Pran Shakti diagnosis, based on your system. Okay, so that's why the therapy customization is done in the 10th week. The body needs to be prepared. Just like when you sow seeds in the field needs to be prepared. So in the same way, the body needs to be prepared to receive this customization. 10th and the last point is extended support for 30 days after the program is over. See, this is the only program that offer support for 30 days, even after the program is over. Why? Because many a times, a lot of people miss their classes due to some reason. Maybe they get too sick, maybe due to some function in the family, whatever reason. So we understand that that is an online program. So we support you for 30 extra days, and there's no extra charge for this, right? So this is what all you get. Now, the most important part. What is the program fee? 14,500 is the normal fee. But like I promised you in the beginning only, that there's a special pricing for people who have stayed back. वो क्या pricing है? Let's see. Just 6,500 for the complete 10 points I talked about, the Pran Shakti diagnosis, the therapy customization, 18 classes, 1 extra customization class, 30 days extra support, 6 weeks of course access, all inclusive. This has so affordable that most of the people can take advantage of this. But this fee is valid till 10th June only, because we have limited seats, and this is for people who can make a quick decision, right? आगे बढ़ते हैं. How to enroll? You pay the program fee. After that, you post the payment receipt in the WhatsApp group. And after that, fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you. And then you join the classes. You join the class WhatsApp group where you'll be getting daily support. And step 5 is to start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa. A simple 5-step process. Payment details we'll share in chat as well as in the WhatsApp group also. And now there'll be I'll just like to stop here for some time, talk about the super team that will be at your service. And we are called a super team by our participants. We do not call ourselves a super team. That's the label that our participants have given because of the kind of support they get and what kind of a hand holding that is done. We have Dashna Shirma Bothra, she's the program director. We have Shalini Bhagwat, she's the class manager, takes care of the batches, the timing and everything, arranging mentors, so on and so forth. Ashwani Kumar, he's the manager IT. Then we have a lot of mentors like Ranjana, R.D. Gupta ji, Soni, Aruna, Neena, Meera, Sushma, Manvi Shroff. Why so many mentors are there? Because we need to give attention to each and every participant so that you don't feel lost, because it's an online program. Because on online things are a bit
different, and sometimes it's a bit difficult also. But nothing to worry about. We have a proper team in place, so we'll take care of everything. And we have Neha Upadhyay. She's the enrollment in charge. She is the person who you'll be talking to the most before you start your classes. Anil Chauhan, that's me. I'll be answering your question in the WhatsApp group. Now, due to shortage of time, Swamiji may not be able to answer all the questions, but do not worry about it. If your question is not taken or not answered here, you just post in the WhatsApp group that you are in. We'll answer each and every question. And please do not get angry if your question is not answered. Please be patient. And then Himanshu Reddy, he is the technical person who takes care of the uploading of the videos, the written instructions, application, app installs, everything. Anita ji, she is the personal support executive. She'll be calling each and every participant to make sure that you are not facing any problem in the class. She'll call you on the phone. Every day she calls about 20 to 30 people to find out if somebody is having a problem or not. Okay. So with this, I come to the end of my part. Thank you for listening to me patiently. And I'll just see if Swamiji has joined or not. Yes, Swamiji has joined. Namaskar, Swamiji. I'm putting you on spotlight. Okay. Just give me a few seconds and I'll read the questions. Okay. Vikas Bansal ji has written the fees seems reasonable, but need to understand the risk and the likelihood of getting the benefits we desire. So, because we think any kind of therapy has to have through medicine. So, whenever you take something which is not your food, जब आप भोजन ले के अलावा कुछ भी लेते हैं, it has a risk. उसके साथ में रिस्क होता है. जो आपके शरीर का ही हिस्सा है, उसके साथ रिस्क नहीं है. So, कुंभक is the most fundamental aspect of how you function or how your body functions. जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया, आप कोई भी जोर लगाते हैं तो कुंभक करता है. तो जोर लगाना रिस्क नहीं क्रिएट करता, इनफैक्ट ये एम्पावर करता है आपको. आपने जोर लगाना बंद कर दिया, आपकी बॉडी रिडंडेंट हो रही, खराब हो रही. तो कुंभक आपके शरीर के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने का, यानी वात को कंट्रोल करने का, उसके बाद वात से पित्त को कंट्रोल करने का, उससे फिर कफ को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है. ये आपके ही लाइफ का एक हिस्सा है जो आपके लिए रिस्क नहीं बन सकता. तो ये रिस्क जो यूजुअली आपने शुरुआत से देखा, इट इज ऑल अबाउट मेडिसिन, केमिकल्स कितना डाल सकते हैं आप, किसके बाद में रिस्क आ जाएगा, तो उसको लेके है. कुंभक को लेके कोई रिस्क नहीं है. ओके. मेरे मदर को हमेशा चक्कर आते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, सो प्लीज टेल मी द ट्रीटमेंट. देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी चीज को ठीक करना है ना, यू हैव टू गो लिटिल डीपर, थोड़ा गहरे जाना पड़ेगा. अभी जो वेस्टर्न अप्रोच है लाइफ को, वो बहुत सतही है, आउटसाइड है. स्पॉन्डिलाइटिस देखा तो आपको लगता है गर्दन में दिक्कत है, मगर गर्दन में दिक्कत क्यों हुआ, तो आप उसके पीछे जाना चाहेंगे, मगर वो पीछे जा नहीं सकते, क्योंकि ये मटेरियल पे रिसर्च करते हैं. क्योंकि वो कोई चीज दिख रही है, मटेरियल दिख रहा है, तो उसी पे रिसर्च होता है. मटेरियल कैसे कन्वर्ट होता है उस पर रिसर्च होता ही नहीं. तो अभी जो मॉडर्न रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इज वेरी वेरी किंडरगार्टन लेवल पे है. मॉडर्न रिसर्च जो हेल्थ के ऊपर है, बहुत किंडरगार्टन लेवल पे है, पहली कक्षा में भी नहीं आया. इसीलिए आप देखेंगे सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, and they are not able to control it. Diabetes,
बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, कैंसर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12% एवरी ईयर। तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एडीएचडी, एंड यू जस्ट टॉक अबाउट एनी क्रॉनिक डिजीज, इट्स जस्ट ऑन राइज, क्योंकि दे हैव नॉट रीच एनी डेप्थ, वो डेप्थ में जा ही नहीं पा रहे, उनके पास में फंडामेंटल्स ही नहीं है। ये हमारे पास में जो फंडामेंटल्स हैं वहां से जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। अब सर्वाइकल की बात अगर हम करते हैं तो मैं इसको 3 तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है? अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा इसको हैंडल कैसे करना। कभी भी शरीर के ऊपर का हिस्सा जो होता है ना, वो कफ प्रधान कहते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं कफ प्रधान हिस्सा। अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो बॉडी के अंदर हमेशा हीट कम होगी, हीट कम होगी। कफ को पित्त के साथ में बैलेंस किया जा सकता है, तो जिसकी बॉडी में हीट कम है उसका मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे क्या होता है, थायराइड का भी इश्यू होता है, स्टिफनेस का इश्यू होता है, डाइजेशन का इश्यू होता है, जिसमें कि वो कहेंगे कि भाई एसिड रिफ्लक्स होता है, ठीक है? ऐसी चीजें आप ऐसी कैटेगरी के लोगों में देखेंगे। अच्छा, पहली बात, अगर कफ प्रधान प्रकृति है तो उसको अगर थोड़ा हीट दे दिया जाए तो फ्लो प्रॉपरली बन जाएगा। ऐसे लोगों में, जैसे थायराइड को हम कहते हैं कफ वात इश्यू, मगर वही इश्यू पीसीओडी भी है, वही इश्यू इनफर्टिलिटी भी है, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसलिए फीमेल्स में ये इश्यू ज्यादा देखने को मिलता है। अगर उनमें थोड़ी हीट बढ़ा दी जाए, बॉडी के अंदर हीट जनरेटिंग कैपेसिटी अगर बढ़ा दी जाए तो उनको वो आराम मिल जाता है। उनके जॉइंट्स जो कि स्टिफ हो रहे हैं या यहां पे गर्दन में स्टिफनेस है तो फिर सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, हीट कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, एक पॉइंट बता रहा हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं आसानी से समझने के लिए। हीट कैसे बढ़ाएंगे? आप थोड़ी देर सांस रोकिए, जितना कैपेसिटी हो आपकी, और थोड़ी देर करते जाइए, 10-15 मिनट करते जाइए, आपको पसीना नहीं लग जाएगा। विदाउट एक्सरसाइज आपको पसीना, कुंभ करते हैं लोग, कहते हैं हमें पसीना नहीं लग गया, यानी हमने हीट बढ़ा दिया, हमने वात को आपके बॉडी के प्रेशर ग्रेडियंट को मैनिपुलेट करके आपके बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन है उसको सही कर दिया, तो सर्वाइकल शांत हो जाएगा। अगर स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर है, इस तरीके की कोई चीज है, ठीक हो जाएगी। इसी का एक रिलेशन है नर्वस सिस्टम के साथ में, न्यूरो रीजनरेशन भी शुरू हो जाता है, डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। हम क्या देखते हैं, थायराइड ठीक हो जाता है, और इस तरीके के इशू जो जिसमें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या कार्डियो मेटाबॉलिक रिदम हो बॉडी का, वो ठीक हो जाता है। अच्छा, एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष आपको बताता हूं। जब भी आपके शरीर में फ्लो ठीक नहीं होगा, चाहे वो गैस का फ्लो हो, वाटर का फ्लो हो, मटेरियल का फ्लो हो, ब्लड का फ्लो हो, अगर फ्लो ठीक नहीं होगा तो आपके बॉडी में इम्बैलेंसेस आते हैं। अच्छा, चक्कर आने का मतलब क्या है? 2 तरीके से इसको समझिए। हमेशा चक्कर जो है, बैलेंस आपके बॉडी का, कान के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, कॉक्लिया कहते हैं, वो एक ऑर्गन है, न्यूरो ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा, जो कि ब्रेन के साथ में कनेक्टेड है, उसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा। जब भी फ्लो ठीक नहीं होगा, वो फ्लूइड का लेवल फ्लक्चुएट करेगा और चक्कर आएंगे। ठीक है, फ्लो ठीक नहीं होना। अच्छा, कफ वात, जब बोला कफ मटेरियल होता है, मटेरियल जब भी बॉडी में कन्वर्ट नहीं होता दूसरी चीजों में तो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फ्लो ठीक नहीं, चाहे वो ब्लड फ्लो हो, हार्मोन फ्लो हो, या और दूसरे तरीके के एंजाइम फ्लो हो। तो ये फ्लो ठीक होना, कान के अंदर कॉक्लिया ये सेंस करता है, और ये हाइपोथैलेमस, आपके पीछे का छोटा मगज है ना, उसके साथ में कोऑर्डिनेशन करता है। इसको पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस भी कहते हैं। तो फ्लो ठीक अगर नहीं हो रहा तो फ्लो ठीक करने का क्या तरीका? अगर आपके किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, फ्लो नहीं हो रहा, पाइप में जमावट आ गई, या आप जूस पी रहे हैं और पल्प आपके स्ट्रॉ में अटक गया, तो कैसे निकालेंगे?
थोड़ा जोर लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा ना फ्लो। अंदर अगर आप प्रेशर ग्रेडियंट को सही करेंगे तो आपका फ्लो ठीक हो जाएगा। कुंभक का मतलब क्या? कुंभक मेजरली आकाश तत्व है आपके शरीर का, जो कि वायु यानी प्रेशर ग्रेडियंट को करेक्ट करता है। तो कुंभक, हम प्रेशर ग्रेडियंट को करेक्ट करके आप देखेंगे फ्लो ठीक हो जाएगा। तो ये जो चक्कर आने का हिसाब है, वर्टिगो है, वर्टिगो जैसी फीलिंग होती है, वो भी ठीक हो जाती है। तीसरी चीज बता रहा हूं, आपको मालूम है जब आप कमजोरी फील करते हैं तब भी आपके हाथ पांव कांपते हैं और चक्कर आते हैं, ब्लैकआउट होता है कभी कभी। हाँ, कमजोर हो गए, बीमार, ये सबको महसूस हुआ होगा, बहुत डिहाइड्रेट हो गया बॉडी, कमजोर हो गए, तो फिर क्या होगा, बैठ के उठेंगे तो अचानक से अंधेरा छा जाएगा। एक थोड़े कम इंटेंसिटी का अगर ये होगा तो आपको चक्कर जैसे आएंगे। अच्छा, एनर्जी लेवल बॉडी का कम है तो भी चक्कर आ जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज बता रहा हूं, हालांकि मैं उसको और तरीके से भी बता सकता हूं, मगर क्या है कि कोई कॉलेज की क्लास तो चल नहीं रही, यूनिवर्सिटी की मैं कितना भी बता दूं आपको फायदा नहीं होने वाला। आपने इतना गूगल पढ़ा, इतना ज्ञान, मगर बीमारी बढ़ रही है। हमने हर चीज में एडवांसमेंट किया दुनिया में पिछले 300 साल में। एक ही चीज है जिसमें जरा भी एडवांसमेंट नहीं किया, वो है हेल्थ, बल्कि वो नीचे कर दिया। केवल हेल्थ ऐसा एरिया है जहां कोई एडवांसमेंट नहीं है। एडवांसमेंट तो छोड़िए, हमने अपने आप को बरकरार भी नहीं रखा हुआ, हम नीचे आ गए, गड्ढे में गिर चुके हैं। तो इसको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। जो आप YouTube में, गूगल में या आपके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाए जा रहे हैं, सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, रादर वो हमको गलत डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। तो कमजोरी किस वजह से होती है? एक सिंपल रीजन है कि आजकल, अगर मैं उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। आपके लिवर में अगर प्रॉब्लम आए तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप खराब हो जाता है। 6 लेवल पे, 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होते हैं आपके शरीर में। पहला लेवल लिवर का है। तो अगर आप केमिकल डाल के लिवर को बॉम्बार्ड करेंगे तो बेचारे कमजोर हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा केमिकल अपने स्किन पे रगड़ लो, जलन होगी, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आपके शरीर के अंदर भी जलन होगी अगर बाहर हो रही है तो जितनी दवाइयां आप खाते हैं वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जैसे दर्द की दवाई आप खाते हैं, दर्द की दवाई क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं इसको। हमारे शरीर में एक इन्फ्लेमेशन को हैंडल करने के लिए एक चीज निकलती है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो वो दर्द क्रिएट करके उस साइट पे, उस जगह पे जाके दर्द को ठीक करती है। हम दर्द की दवाई खाकर उसको कट कर देते हैं ताकि दर्द ही फील ना हो। तो आपके बॉडी के अंदर तो इन्फ्लेमेशन होगा। सबसे पहले लिवर, और लिवर को ओवरलोड करेंगे क्योंकि दवाई तो लिवर लेगा नहीं। तो लिवर 99% आपकी दवाई जो 500 मिलीग्राम की अगर आप पैरासिटामोल खा रहे हैं तो 498 तो निकाल देता। 2 मिलीग्राम आपके शरीर में जबरदस्ती घुसाया जाता है, ओवरलोड किया जाता है। तो यहीं से आपने अपने बॉडी को टॉर्चर करना शुरू किया। तो जब भी कोई केमिकल डालते हैं आपके शरीर में तो आपका बॉडी टॉर्चर करके आपके बॉडी को जो भी आप कहते हैं रिलीफ लेके आते हैं। तो लिवर को प्रॉब्लम हो गई, अब लिवर कमजोर हो गया, ओवरलोड हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो आप थोड़ा सा घी लगाएं वहां पे जहां इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक हो जाएगा जलन। तो आपका लिवर भी फैट क्रिएट करे, इसे फैटी लिवर बोलते हैं। मगर वो तो अपने बचाने के लिए अपने आप को कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए और क्या चीज होगी? कॉर्टिसोल। आपके शरीर में एक चीज बनती है कॉर्टिसोल, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फैट के साथ में मिलकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनता है, जो कि आपके शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो वो बनाने के लिए उसको चाहिए क्या? वो बनाने के लिए उसको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड चाहिए। तो इसका मतलब वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। आप कहेंगे गलत कर दिया। लिवर पे फैट क्रिएट करेगा, वो कहेंगे गलत कर दिया। फीवर करके अगर वायरस को मारना चाहेगा आपकी बॉडी तो पैरासिटामोल खा के उसको कम कर दोगे फीवर को। कहोगे फीवर किया, गलत किया। उल्टी करेगा आपका शरीर तो कहेंगे गलत किया, कर दिया, उल्टी बंद कर देंगे। दस्त करेंगे तो दस्त बंद कर देंगे। क्या इसको आप ट्रीटमेंट बोलने लग गए? पिछले 100 सालों में अपने
अपने बॉडी को टॉर्चर करने को ट्रीटमेंट बोलने लग गए। फिर ह्यूमन हेल्थ तो बढ़ नहीं सकती, कमी होगी। वही हो रहा है, डेटा उठा के देख लीजिए 100 सालों का। नहीं तो याद कीजिए अपने दादा दादी नाना नानी, वो आपसे बेटर थे कि नहीं हेल्थ में। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमेशा आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब करता है, कमजोरी क्रिएट करता है। इसीलिए डायबिटीज के लोगों को कमजोरी फील होती है, थायराइड के लोगों को कमजोरी फील होती है, हार्ट डिजीज वाले लोगों को कमजोरी फील होती है। तो कमजोरी फील होगी तो आपका शरीर जो है वो बैलेंस नहीं बना पाता और चक्कर आएंगे या ब्लैकआउट होगा आपके शरीर में। आपका शरीर बोलेगा अभी मैं काम करने के लिए तैयार नहीं। ये 3 चीजें बताया, अभी और भी बता सकता हूं इसके बारे में, मगर क्या फायदा। आप थोड़ा अपने शरीर को ठीक कर दीजिए। मैं आपके शरीर का एडवोकेट हूं, ऐसा मानना मुझे। आपने शरीर को टॉर्चर किया पिछले 100 सालों में, आज कम से कम उसको टॉलरेंस बढ़ा दो। टॉर्चर करने से तो रोक नहीं सकते, आदत लग गई है हमें टॉर्चर करने की, है ना। सरकार बोलती है टॉर्चर करो, सरकार ने लॉ बना रखे हैं बॉडी को टॉर्चर करने के, दवाई खाने के, दवाई से ट्रीटमेंट करने के। तो आप तो बच नहीं सकते। यहां तक कि फूड भी टॉर्चर हो गया है ना, क्योंकि फूड डिविएट हो चुका है। तो आपका बॉडी फूड को भी रिस्क समझता है, मेडिसिन को रिस्क समझता है, फूड को रिस्क समझता है, एनवायरमेंट को रिस्क समझता है। टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, थोड़ा झेलने की क्षमता बढ़ा लीजिए, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम चली जाएगी आपकी लाइफ से। झेलने की क्षमता के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारी लाइफस्टाइल को ऐसा बना दिया कि हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत ड्रास्टिकली कम हो चुका है। कुंभक करके ही हम टॉलरेंस बढ़ाते हैं, नहीं तो ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखो। 10 किलो उठाते हैं, 15 किलो उठा के देखो। 10 किलो उठाने के लिए क्या करते हैं, सांस को रोकते हैं। 15 किलो उठाने के लिए उसको रोकने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्ड योर ब्रेथ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही बढ़ाएंगे टॉलरेंस बढ़ जाएगा, सिम्टम खत्म हो जाएंगे बॉडी। तो 3 चीजें बताया ये क्यों हो रहा है, उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। मगर अप्रोच में एक ही चीज है जो इन तीनों को अप्रोच कर सकता है, वो है कुंभक। तो अष्टांग चिकित्सा मेन कुंभक के अराउंड में काम करता है। प्रिसीजन ट्रीटमेंट है, इसलिए डायग्नोसिस है, उसके बाद में कस्टमाइजेशन है। Next question is from Dr. Sonal. She asks, can corneal degeneration 15% be helped? कॉर्निया या ऑर्निया? Corneal, related to the Corneal. cornea. Corneal, cornea से related. कॉर्निया से related। जी। देखो एक चीज सिंपल बता रहा हूं। नाउडेज यू मस्ट बी हियरिंग कि ग्लूकोमा के केसेस बढ़ रहे हैं और आरडी, रेटिना डिटैचमेंट, ये 2 चीजें जो है इट इज ऑन राइज, ये राइज पे है। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, समथिंग जिसके ऊपर बहुत अच्छा काम भी हुआ है मगर और काम होने की जरूरत है, वो है सर्जरी। सर्जरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलोपैथी, सर्जरी इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, जिसे एलोपैथी ने अपने में डाइजेस्ट किया मगर उस पर काम भी किया। तो दैट इज गुड, मगर सर्जरी हमेशा बहुत जरूरत होने पर ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब डीजेनरेशन के केसेस होते हैं उसमें सर्जरी जो है वो डीजेनरेशन को रोक नहीं सकता। ऐसा बोलने की कोशिश की जाती है कि हम न्यूरो डीजेनरेशन ऑफ रेटिना को है हम कम से कम रोक सकते हैं, चाहे वो सर्जरी के थ्रू हो, लेजर के थ्रू हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। हमेशा डीजेनरेशन बढ़ता ही है। आप डेटा उठा के देख लीजिए, सर्जरी से आप डीजेनरेशन को रोक नहीं सकते। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मैनेज करने के लिए, कोई अर्जेंटली मैनेज करने के लिए सर्जरी करा सकते हैं, मगर सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं होता है। सर्जरी इज जस्ट मैनेजमेंट। दूसरी बात, केमिकल दवाई यानी एलोपैथिक मेडिसिन से डीजेनरेशन बढ़ता है, कम होने का कोई एविडेंस नहीं है। बढ़ने का 100 साल का एविडेंस है, कम होने का एक भी एविडेंस नहीं है। तो केमिकल दवाई से आप डीजेनरेशन को रोक सकते हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो ये 2 चीज मैंने आपको साफ साफ बता दिया।
पहली बात, सर्जरी कराना जरूरी होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, बहुत जरूरी होने पे करवा सकते हैं, मगर वो ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा, केमिकल दवाई ट्रीटमेंट नहीं है। नाउ लेट्स कम टू ट्रीटमेंट। रीजनरेशन कौन करता है आपके शरीर के अंदर? तो जब इतने छोटे बच्चे थे, उसके बाद में बड़े हो गए और बड़े हो गए और बड़े हो गए, इसका मतलब रीजनरेशन कैपेसिटी आपके बॉडी के अंदर है। इसको दो तरीके से देखेंगे। एक, अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करेंगे तो आपके बॉडी को जरूरी चीजें मिलेंगी और वो रीजनरेट करेगा, वो ऑलरेडी जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी है। दूसरी चीज, आपका शरीर के अंदर एक ड्रास्टिक रीजनरेशन फैक्टर भी है। वो क्या है? वो है स्टेम सेल्स। हर ऑर्गन में स्टेम सेल्स होते हैं, अगर उनको ट्रिगर किया जाए तो रीजनरेशन करना वो शुरू करता है। क्या हमारे पास में इसका एविडेंस है? हां जी, बहुत एविडेंस है, एक नहीं। पैरालिसिस के केस में रीजनरेशन, ड्रॉप फुट, माइस्थीनिया ग्रेविस, लॉक जॉ, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा ठीक होना, हमारे पास में ऐसे लोग हैं। तो रीजनरेशन के केसेस हमारे पास में बहुत सारे हैं। लेकिन रीजनरेशन का ट्रिगर क्या है? यानी उन स्टेम सेल्स को रीजनरेट करने का ट्रिगर होता क्या है? वही कुंभक है। इंटरनल प्रेशर जो होता है वही एपीजेनेटिक ट्रिगर होता है एक ह्यूमन बॉडी का। इंटरनल प्रेशर जो होता है, दोबारा से सुनिए, वही एपीजेनेटिक यानी जेनेटिक्स को करेक्ट करने का ट्रिगर होता है ह्यूमन बॉडी का। वही स्टेम सेल्स को ट्रिगर देता है। कुंभक इज एपीजेनेटिक ट्रिगर। मेटाबॉलिज्म का बता दिया। एक और चीज बता देता हूं, हमारे बॉडी में 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो कि 6 अलग अलग शक्तियां, स्ट्रेंथ काम करती हैं। इसे कहते हैं देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। अगर इनको इंप्रूव कर देंगे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। मेटाबॉलिज्म अगर इंप्रूव कर पाएंगे तो रीजनरेशन या रिकवरी आपके बॉडी का अच्छा होगा। दूसरा फैक्टर है जिसे मैं कह रहा हूं कि अगर आप एपीजेनेटिक ट्रिगर देते हैं अपने बॉडी को तो वो दोबारा से रीजनरेट करता है। कितना रीजनरेशन हो सकता है डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, मगर रीजनरेशन 100% होता है, ये पक्का है। तो टाइम किसी को बहुत जल्दी लगता है ठीक होने में, किसी को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, मगर ट्रीटमेंट करेंगे तभी तो ठीक होंगे। आप तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे, दवाई खा के मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे, मैनेज करने की। तो आपके शरीर की शक्ति तो दवाई खा के बढ़ती ही है। आपके शरीर की जो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, जो रीजनरेटिव स्ट्रेंथ है, जो इम्यून स्ट्रेंथ है, वो तो दवाई खा के नहीं बढ़ता। वो तो कुंभक से बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर कुंभक से वो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो रीजनरेशन 100% होगा। टाइम अलग अलग लगेगा अलग अलग लोगों को। थोड़ा पेशेंस रखें, अपने बॉडी को थोड़ा चांस दें, मौका दें, अपने बॉडी को क्रिमिनल ना माने, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। Next question is from Christine Pies. Ashtang Chikitsa addresses problems like diabetes. So why do you have a separate course for diabetes? Ashtang Chikitsa is not directed toward diabetes. Addresses diabetes अगर हम कहेंगे तो डायरेक्टली कहना ठीक नहीं है। इनडायरेक्टली इट एड्रेसेस डायबिटीज, नॉट डायरेक्टली। तो आपके बॉडी, आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की होती हैं और इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम अलग अलग होती है। सपोज कीजिए आपको डायबिटीज है और डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ठीक है? तो डायबिटीज को एड्रेस करना ज्यादा बेटर होता है देन एड्रेसिंग द न्यूरोपैथी ओनली। मगर होता क्या है कि इफ यू एड्रेस न्यूरोपैथी, डायबिटीज कुछ लेवल तक उसको भी फायदा होता है, बट दैट इज, मतलब उसको हम ट्रीटमेंट जैसा नहीं बोलते। अब न्यूरोपैथी अगर आपको ज्यादा है डायबिटीज की वजह से और बाकी सिम्टम इतने ज्यादा नहीं है, तो आपको न्यूरोपैथी पहले एड्रेस करना चाहिए। तो ये अगर कंफ्यूजन है आपको, तो प्लीज राइट डाउन योर प्रॉब्लम, पुट डाउन योर नंबर एंड somebody will call you, talk to you about your problem. What is a major problem in your life? उसमें किसको आप पहले एड्रेस करना चाहते हैं, एंड देन वी कैन गाइड यू टुवर्ड्स द राइट प्रोग्राम। तो आपके बॉडी के अंदर जिस तरीके से अलग अलग फोर्सेस एंड फैक्टर्स होते हैं, जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो अलग अलग फोर्सेस एंड फैक्टर्स होते हैं।
तो हम कुंभक थेरेपी को उस पर्टिकुलर जो एड्रेस हमें करना, जो सबसे वीकेस्ट एस्पेक्ट है, उसकी तरफ में डिजाइन कर देते हैं या फिर ओरिएंट कर देते हैं। ओरिएंटेशन से जल्दी लाभ मिलता है, प्रॉपर लाभ मिलता है, और बाकी सारी प्रॉब्लम भी साथ साथ में एड्रेस हो जाती है। तो अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट करने का रीजन यही था। अब एक और एग्जांपल दूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, कि आपका लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता, आपका हार्ट आपके किडनी के बगैर काम नहीं करता, आपकी किडनी आपके लंग्स के बगैर काम नहीं करती, आपका लंग्स आपके ब्रेन के बगैर काम नहीं करता। मगर इतने सारे डॉक्टर्स, आपने उनसे पूछा तो नहीं कि जब सारे एक साथ काम करते हैं तो एक ही डॉक्टर होना चाहिए, सारे डॉक्टर नहीं होने चाहिए, है ना? एक आंख का, अभी लेफ्ट आई का अलग डॉक्टर बन जाएगा, आगे चल के राइट आई का अलग बन जाएगा, और शायद एक एक दांत के भी बन सकते हैं। तो क्या ये सही चीज है? नहीं, लाइफ तो एक साथ काम करती है। नहीं नहीं, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ में ज्यादा इशू है तो हम उस ऑर्गन को एड्रेस करेंगे। मगर प्रॉब्लम एलोपैथी के साथ में क्या है कि वो केवल एक ही ऑर्गन को एड्रेस करते हैं, पूरी बॉडी को नहीं करते। जबकि एक ऑर्गन के साथ में उनको पूरी बॉडी को भी एड्रेस करना चाहिए, मगर उनका मॉडल ही नहीं है ऐसा। हमारा मॉडल है वो हमने मॉडल बनाया है कि एक पर्टिकुलर वीकनेस जो कि प्राण शक्ति डायग्नोसिस से हमें पता लगता है, उस तरफ में एड्रेस करते हैं। मगर आपके सिम्टम देख के, आपकी लाइफ को भी देख के आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर सबसे ज्यादा है, तो इसको अगर एड्रेस करें और साथ में बाकी चीजों को एड्रेस करें तो कैसे करें, देन वी कैन गाइड यू। क्योंकि कुंभक थेरेपी डिजाइन ऐसे की गई है कि एक एस्पेक्ट को हम एड्रेस करते हैं मगर साथ में होलिस्टिकली भी एड्रेस करते हैं। मगर जिस तरफ में ज्यादा प्रॉब्लम है उस तरफ में जाना अच्छा रहता है, आपको ज्यादा फायदा होगा। Next question is from Amit Bajpai ji. How long the benefits last after the completion of the program? Do we have to follow it throughout the life? How long the benefit lasts? How long the health lasted in your life? सवाल क्या है कि हेल्थ आपके जीवन में आप कितने समय तक बचा सके। तो क्या हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, कम होती है? क्या लाइफ खत्म होती है? हाँ जी। अभी ये वेस्टर्न साइकोलॉजी आप थोड़ा छोड़ दीजिए, हालांकि आपके स्कूलों में यही पढ़ा जाता है, मगर क्या करें कि लीनियर तरीके से सोचना छोड़ दीजिए, नहीं तो हम सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे लाइफ में। देखिए 100 साल का वेस्ट ने हेल्थ का मॉडल बनाया और दुनिया पे उसको माफिया की तरह डाल दिया, मगर हेल्थ हम अचीव नहीं कर पाए। इनफैक्ट हेल्थ खराब कर दिया हमने, क्योंकि लीनियर थॉट प्रोसेस है, साइक्लिकल थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तब जाके सॉल्यूशन हमारे को मिलेगा। तो जब भी कोई चीज आप करते हैं इट गोज टू हाई, और जैसे ही आप छोड़ देते हैं इट विल कम डाउन। ये नेचर का लॉ है, ये नियम है। तो अब क्या मुझे ये जो मैं सीखना है मुझे क्या लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा? नहीं, टेक्निकली नहीं। क्या मुझे हमेशा जीना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोशिश करके भी देखिए नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही बेनिफिट आपको मिल जाता है, कम से कम कहते हैं 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको करना चाहिए। एक बार आपके बेनिफिट आ गए उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में इट विल लास्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर टेकिंग, द काइंड ऑफ एनवायरमेंट दैट यू आर लिविंग, द काइंड ऑफ साइकोलॉजी दैट यू कैरी, ऑल्सो अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट। दो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वापस अपने आप को कितनी जल्दी खराब करेंगे या कितने देर से खराब करेंगे। क्योंकि अभी भी तो खराब किया आपने, चाहे वो अच्छाई के नाम पे किया, चाहे वो साइंस के नाम पे किया, चाहे वो न्यूट्रिशन के नाम पे किया, चाहे प्रोटीन खा के किया हो, चाहे कुछ भी गड़बड़ सोच के किया हो, मगर खराब तो किया। तो अगर आप कितनी जल्दी खराब करते हैं अपने आप को, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मगर हम ये आपको बता दें कि अगर आप एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ला देंगे आपके बॉडी के अंदर, तो 12 साल तक उसको सस्टेन करना चाहिए आइडियल कंडीशन में। मगर कहते हैं नहीं, 12 साल तक आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो 6 साल कर लीजिए, अगर वो भी नहीं तो 3 साल कर लीजिए। तो 3 साल के बाद में आप अगर वापस से आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हुई तो आप कुंभक शुरू कर दीजिए, आपने तो सीख लिया कैसे ठीक करना। और अगर उससे भी कम टाइम में अगर आप खराब करते हैं तो गैप दे दे के आप इसे चालू करके रखिए। 1 साल 2 साल के अंदर ड्रॉप किया, फिर चालू कर दिया, और ये कुंभक आपको इवॉल्व करता जाएगा अलग अलग लेवल पे।
ये नुकसान तो करेगा नहीं, ये तो फायदा ही करेगा। तो ऐसा इंटरमिटेंट, जैसे कहते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इंटरमिटेंट कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड विच वी से 6 months to 1 year। उसके बाद में आप इंटरमिटेंट कर लो। Nihal ji writes, please tell about knock knees. Knocking knees. नॉकिंग नीज, एक चीज मैं आपको थोड़ा बताऊं, ये इस तरीके से आपने कभी सोचा नहीं होगा। हालांकि दिस वी कॉल एज स्ट्रक्चरल इशू, स्ट्रक्चर का इशू है, मगर ये स्ट्रक्चर का इशू आता क्यों है? सो ह्यूमन बींग्स इन द लास्ट 25 years इफ यू सी, पिछले 25 सालों में, हालांकि ये प्रोसेस तो बहुत पहले से चल रहा है, मगर पिछले 25 सालों के अंदर हम देख रहे हैं कि एंजाइटी लेवल्स ह्यूमन बींग्स में बढ़ गए। फियर, एंजाइटी, मतलब इस तरीके से कि हमेशा हमेशा एक तरीके से एक्टिव रहना, डर का माहौल शरीर के अंदर, रिस्क का माहौल शरीर के अंदर, ये बढ़ गया। इसको और तरीके से भी बोल सकते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल फटीग, ऐसे नाम से भी हम जानते हैं। अच्छा, इसको और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कार्डियो मेटाबॉलिक रिदम खराब हो गया। इसको और भी बोल सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सेस जो है उसको इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गया, पिट्यूटरी एक्टिविटी डिविएट हो गया, ऐसे कुछ भी नाम बोलिए। फंडामेंटली ग्रीको रोमन शब्द ना बोल के आसानी से समझेंगे तो जल्दी ठीक होंगे कि हमारे अंदर बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड, वी हैव गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ फियर और रिस्क, ऐसे में आ गए। आप देखेंगे कि जब आपके शरीर में रिस्क बढ़ता है तो आपका शरीर जो है वो फैलता नहीं है, सिकुड़ जाता है। जैसे केवल इतनी सी बात कि आपको ठंड भी लगती है तो आप देखेंगे आप दोनों पांवों को साथ में रख लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिविएशन का एक मेजर फैक्टर जो कोई देख ही नहीं रहा, आई हैवंट सीन एनी रिसर्च। पहली बात तो रिसर्च ही बकवास है दुनिया में, आप कोई भी रिसर्च को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मगर उसको साइंस बोलने की ऑडेसिटी है, ठीक है ना? डबल ब्लाइंड स्टडीज कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, मगर उसको साइंस बोलने की ऑडेसिटी वेस्ट की है। दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन। ये सबसे बेवकूफ प्रजाति जो है उसको हमने दुनिया की पूरा ठेका दे दिया वेस्ट को। प्रॉब्लम ये हो गई, ये रिसर्च ही नहीं हो रहा। जब भी रिस्क बढ़ेगा तो आपके स्ट्रक्चर पे किस तरीके का असर आएगा? तो उसमें से एक चीज है, जब भी वात दोष होगा, इसको आयुर्वेदिक टर्म्स में बोल रहा हूं, रिस्क वात दोष के साथ में डायरेक्टली अटैच है। वात दोष होगा तो कमर के नीचे का स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। आप आमतौर पे क्या देख सकते हैं, घुटने खराब हो रहे हैं लोगों के, घुटने दर्द हो रहे हैं, पांव में दर्द होता है, न्यूरोपैथी पांव में ज्यादा बढ़ रहा है, इस तरीके की चीज है। कमर और कमर से नीचे आप देखेंगे प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया। इन फीमेल्स आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया। कमर और कमर से नीचे की चीजें बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि यंगस्टर्स को भी हो रहा है। तो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, अगर हम देखें स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, उसको हम कहते हैं व्यान शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताता हूं। आपके बॉडी में स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है, कैसे पता चलेगा? आप अगर मैक्सिमम इनहेल करके 4 times और मोर अगर उसको होल्ड कर पाए, और उसके बाद जितना टाइम इनहेलेशन किया उसका डबल टाइम में एक्सेल करें और आप कर पाए, तो आपके स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर है। आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा, आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा। ट्राई करके देखो। तो क्या आपको वो स्ट्रेंथ को बढ़ाना नहीं चाहिए? सो व्हाट प्रैक्टिस आर यू डूइंग फ्रॉम द चाइल्डहुड? हमने रिस्क तो बढ़ा दिया, मगर रिस्क का टॉलरेंस तो बढ़ाना पड़ेगा आपके बॉडी के अंदर।
तो उसके लिए आपने बचपन से क्या किया? हमने एनवायरनमेंट खराब कर दिया, मगर नए खराब एनवायरनमेंट को झेलने की शक्ति वो तो क्रिएट नहीं किया आपने। आपने काम तो अलग अलग तरीके के तैयार कर दिए, सोशियो इकोनॉमिक वर्क, मगर उस काम में जो स्ट्रेस फैक्टर है, जो लोड है, उसको झेलने की शक्ति तो आपने क्रिएट नहीं किया। आपने अपने आप को एनवायरनमेंट से कट ऑफ कर दिया, मगर एनवायरनमेंट जो आपके अंदर टॉलरेंस क्रिएट करता था, वो करने के लिए आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया। और फिर भी सोच रहे हैं कि हम हेल्दी हो सकते हैं। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। तो पहली बात, आप रिस्क नहीं हटा सकते, आप टॉलरेंस बढ़ा दीजिए। तो उसके लिए आपको कुंभक करना ही पड़ेगा। कोई और ऑप्शन है नहीं? एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हार्ट आपका इतना मजबूत है ही नहीं, वो कमजोर हो गया। किडनी कमजोर हो गई, लिवर कमजोर हो गया, लंग्स कमजोर हो गए। पहले उसको बढ़ा लो, उसको स्ट्रेंथ कर लो, स्ट्रांग कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पोर्ट्स इंजरी बढ़ रही है, क्या आपको मालूम है? स्पोर्ट्स के लोग हार्ट अटैक आ जाता है उनको। सो टॉलरेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपके अंदर का इकोसिस्टमिक प्रेशर से ही वो किया जा सकता है। कुंभक इज रेगुलेटिंग दैट, कुंभक कंट्रोल्स दैट इकोसिस्टमिक प्रेशर। वो कुंभक क्रिएट करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंडक्ट करता है। अगर ये करेंगे तो आपके ऑर्गन मजबूत हो जाएंगे, आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, किसी एनवायरनमेंट में रहो, आप ये इंश्योर कर पाओगे कि यू रिमेन हेल्दी। Poonam Singh ji writes, I want to understand which program should I take. I have hypothyroid, diabetes for 20 years. My HbA1c is high. देखिए, पुट डाउन योर नंबर, फोन नंबर। अभी एक एक को अभी हम उसके गाइड तो नहीं कर सकते ना अभी। तो अगर आप अपना नंबर छोड़ दें, कोई आपको कॉल करके आपकी सारी प्रॉब्लम को लिस्ट करेंगे, फिर वो मेरे साथ में शेयर करेंगे, तो मैं फिर वो गाइड कर दूंगा। एक एक को अभी वेबिनार में नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना नंबर डालिए एंड somebody will get in touch with you and then he'll talk with you in detail what all problems you have. Mahesh ji asks, can breast lymph nodes be cured by Ashtang Chikitsa? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, एक और क्वेश्चन है लक्ष्मी देवी जी का, कैन यूट्रस फाइब्रॉइड्स बी क्योर्ड? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाऊं, और टेक्निकल होकर समझाना पड़ेगा। थोड़ा समझाता हूं कि ये लिम्फ नोड में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये बहुत बढ़ रहा है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत बढ़ रहा है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बढ़ रहे हैं, लिम्फ नोड स्वेलिंग जो है, या वहां पे गांठ बनना, ये बहुत कॉमन है। लिम्फेटिक कार्सिनोमा या लिम्फोमा भी कहते हैं, उसका कैंसर भी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? क्या इसको एड्रेस नहीं करना चाहिए? पहले इसको समझेंगे ना, ये हो क्यों रहा है, ताकि हमें पता चले कि ये सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। तो जब भी एक पार्ट मैं पहले ही बता चुका, व्हेन यू टेक अ केमिकल, हम केमिकल से शुरू करेंगे। इट हैपन्स फॉर अदर रीजंस ऑल्सो, बट मेजरली इट इज केमिकल। केमिकल जब आप शरीर में लेते हैं तो लिवर उसका मेजरली उसको निकालने के काम में लग जाता है। जैसे आपका छत टूटा हुआ है, ऊपर से कचरा गिर रहा है, तो आपकी पूरी एनर्जी जो है कचरे को निकालने में लग रही है। घर से आप साफ करते जा रहे हैं तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट वहां पे होता है, आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही लिवर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाता, वो आपने जो खाया उसको निकालने के चक्कर में ही लगा रहता है। वही किडनी भी करता है काम, किडनी के थ्रू ही निकलता है, वाटर में डिजोल्व करके किडनी के थ्रू निकलता है। तो बॉडी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या ये कह लीजिए जल तत्व कम हो गया। अगर जल तत्व बॉडी में कम होगा तो हार्ट डिजीज बढ़ जाएगा। तो आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा। अच्छा, लिवर पे लोड आया, अब लिवर काम बाकी नहीं करेगा, यानी कि आपका इंसुलिन जो है वो लिवर में ही आके गिरता है। आपका T4 T3 में लिवर में ही कन्वर्ट होता। तो डायबिटीज बढ़ गई, थायराइड का इश्यू बढ़ गया, क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा, मगर उससे कोरिलेट नहीं कर रहे। अब इंसुलिन लिवर पे आके गिरता है, लिवर कहता है भैया मैं तो कमजोर हूं,
मैं तो काम नहीं कर रहा। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो लिवर ने इस्तेमाल नहीं किया इंसुलिन को। इंसुलिन कहां पे रह गया? आपके ब्लड में रह गया। तो जहां पे भी ब्लड का काम ज्यादा होगा वहां इंसुलिन ज्यादा होगा। ठीक है? तो इंसुलिन से हाइपर इंसुलिनीमिया भी कहते हैं। तो एक फीमेल में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज पे ब्लड का ज्यादा प्रवाह होता है, वहां पे इंसुलिन भी ज्यादा है। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, यानी किसी चीज को, मांस के टुकड़े को बढ़ा देगा, तो सिस्ट हो जाते हैं वहां पे। इसे पीसीओडी कहते हैं, इसे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कहते हैं, चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, या फिर यूट्रस में मल्टीपल सिस्ट कहते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? आपका शरीर में जहां भी ब्लड ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है वहां पर भी सिस्ट होने के चांसेस होते हैं। यानी कि अगर फीमेल्स में ब्रेस्ट में न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम ज्यादा होता है और वहां पे सिस्ट देखे जा सकता है। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब आपका लिवर जो है वो गंदगी को निकाल रहा है किडनी से, किडनी पे भी लोड आ रहा है। तो आप एक चीज ढूंढिए, दुनिया में या इंडिया में आपके अराउंड में डायलिसिस सेंटर कितने ज्यादा खुल गए? तो आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा खुल गए। तो या किडनी पर लोड डालेंगे, किडनी फेल होना शुरू हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा और किडनी की क्षमता कम हो जाएगी। तो डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा आगे चलकर। अच्छा, एक तो किडनी के थ्रू कोई चीज एग्जिट कर रही है, डिटॉक्स हो रहा है, लेकिन लिम्फ एक बहुत बड़ा डिटॉक्स एस्पेक्ट है आपके बॉडी का। तो अगर इंटरनल प्रेशर ग्रेडियंट ठीक नहीं होगा तो लिम्फ जो है उसका मूवमेंट नहीं होता कभी भी। बॉडी की एक्टिविटी से ही लिम्फ का मूवमेंट होता है, नहीं तो वो एक ही जगह जमा रहेगा। जब भी जमा रहेगा तो पहले इंफ्लेमेशन होगा, फिर वही लिम्फ कन्वर्ट होके विद द न्यूट्रिशन गांठ सा बन जाएगा। तो लिम्फ नोड में गांठ एक कॉमन चीज होती जा रही है। अच्छा, आपके जॉइंट्स भी लिम्फ नोड होते हैं। कोई भी जॉइंट है आपके शरीर का वो लिम्फ नोड है। तो जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, जॉइंट का इश्यू, ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, ये आप देखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर जब भी लिवर खराब होता है तो मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स और इम्यून रेस्पॉन्स, ये दो रेस्पॉन्स होता है। जो आप केमिकल खाते हैं तो इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स कम हो जाता है। रिस्क बॉडी में बढ़ेगा तो इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स कम हो जाएगा। और ये अगर फ्लक्चुएट करेगा तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो बाद में चल के कैंसर का रूप लेता है, जहां पे कि आपके बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स डिविएट हो जाते हैं। तो ये दो चीजें भी बढ़ रही है, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपका बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स और मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स को ठीक करना होगा। ये क्या है? ये कोई दवाई से ठीक होगा? दवाई से तो खराब हुआ, और दवाई बनाओगे और खराब हो जाएगा। ये आपके बॉडी का रेगुलेटिंग स्ट्रेंथ है, शक्ति है इसको रेगुलेट करना। आप अपने बॉडी की वो शक्ति, मेटाबॉलिक रिस्पांस की स्ट्रेंथ और इम्यून रिस्पांस की स्ट्रेंथ को अगर ठीक करते हैं, सही करते हैं, तो ही ये चीज ठीक होगी। तो हमारे पास में केसेस हैं जहां पे कि हम लोग एक गर्भाधान और अष्टांग गर्भ संस्कार, दैट मीन्स फर्टिलिटी का प्रोग्राम करते हैं। उसमें हमने देखा है कि फीमेल्स में उनके पीरियड ठीक हो गए, हार्मोन लेवल ठीक हो गया, एएमएच काउंट दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता, हमारे प्रोग्राम में बढ़ जाता। स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोर्फोलॉजी, मोर्टालिटी, ये सब हमारे प्रोग्राम में ठीक हो जाता। तो ये प्रूफ है कि हम मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस सही कर रहे हैं। रीजनरेशन एक प्रूफ है कि मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस हमारा ठीक हो रहा है। लोग जो कुंभक करते हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन उनको नहीं होता, और होता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है।
मैं आपको ऐसे केसेस बताऊंगा जहां हाई शुगर लेवल 450 शुगर लेवल के साथ में इन्फेक्शन ठीक हो गया, ग्लूकोमा ठीक हो गया, न्यूरोपैथी ठीक हो गया, सिम्टम खत्म हो गए। ये कैसे हो सकता है? दवाई से नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने बॉडी का मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छा कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये चीजें आपकी लाइफ में कोई सिम्टम क्रिएट नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी और धीरे धीरे करके ये चली जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन। Okay. Geeta ji writes endometriosis. एंडोमेट्रियोसिस मैंने अभी बताया Yeah, आपको। हाँ. I think we are done. Celine D'Souza writes, I have osteoporosis, knee osteoarthritis, back pain, tailbone pain since a year after a fall. Please advise which program I should select. This is the program to select. हाँ, So, if it has happened after a fall, this is the program for it. yeah. I also have hypertension since few years. हाँ, तो वो कोई नहीं, वो Yeah. हाइपरटेंशन पे एड्रेस हो जाएगा। हाँ हाँ. So, we are done, Swami ji. आपका वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपकी लाइफ में खूब हेल्थ हो, मगर अपने बॉडी को क्रिमिनल ना बनाएं। गिव योर बॉडी अ चांस। फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स इट हैज नॉट क्रिएटेड एनी डिजीज। उसको मौका दीजिए, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। Thank you everyone for attending the webinar. और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं किया गया है, प्लीज डू नॉट वरी। आप वेबिनार ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर सभी एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अनदर रिक्वेस्ट इज नॉट टू कीप योर क्वेश्चन टू योरसेल्फ। मोर यू आस्क द मोर क्लैरिटी यू विल गेट अबाउट द प्रोग्राम। जैसे काफी क्लैरिटी तो अभी मिल चुकी होगी एंड कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर भी कर दिया है, बट जस्ट रिमेन इन द ग्रुप। कई बार क्या होता है कि कोई थेरेपी जिसके बारे में हम पहली बार सुनते हैं तो एकदम से ट्रस्ट नहीं आता है, तो दैट इज ओके। सो टेक योर टाइम, because in the next couple of days we'll be sharing a lot of testimonials of people who have benefited। और क्योंकि जो डिस्काउंटेड ऑफर है 6,500 का, जो एक फी का वो है, वो सैटरडे तक है 12:30 तक। सो दोज ऑफ यू who can decide very fast, so you can take advantage of this। And for people who still have questions, please post in the WhatsApp group and we will answer all your questions। With this, we end the session. Namaskar and good night, everyone. Thank you.